हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी यूट्यूब चैनल। यार आज के इस वीडियो में मैं अप्लाई करूंगा 100 प्लस जॉब्स के लिए और उसमें इंटर्नशिप इंक्लूड रहेंगी। मतलब कुछ उसमें जॉब के लिए अप्लाई करूंगा और कुछ मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूंगा। टोटल होंगे ये 100। तो इसमें से हम चेक करेंगे कितने के रिप्लाई आते हैं, कितने के असाइनमेंट आते हैं और कितने के आगे स्केड्यूल होते हैं और कितने सारे रिजेक्शन आते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं एक टू डू लिस्ट। उससे ये रहेगा कि हम अप्लाई करते साथ साथ अपने बना लेंगे दूसरे प्रोजेक्ट जैसे मॉक इंटरव्यू, और एक नया प्रोजेक्ट है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, डीएसए कोडिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अभी चलते हैं हम टू डू लिस्ट पर। और सो गाइस, अभी आ चुका हूँ मैं अपने स्टडी टेबल पर और यहाँ पर आकर के सिंपली सर्च कर लेना आप लोग माइक्रोसॉफ्ट टू डू। तो सिंपल जैसे ही इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सारे टास्क आ जाएंगे जैसे कि मैंने अभी लिख चुके हैं। तो यहाँ पर देखो ऐड अ टास्क, तो सिंपली यहाँ पर लिखना जो भी लिखना हो और फिर इंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पर एक एक करके सारे आपके असाइन हो जाएंगे, यहाँ पर सारे टास्क आ जाएंगे। तो एक एक करके मैं दिखाता हूँ अपना। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट हम एंड्रॉइड स्टूडियो में और नए प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक टास्क पहले ही उसमें इम्प्लीमेंट कर लिया है, एक फीचर जो कि है बॉटम ऐप नेविगेशन। तो उसे मैं सिंपली रन करता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि सुबह से अभी तक वही कर रहा था और फिर गया था मैं नमाज़ पढ़ने और वहाँ से अभी आकर के अब बना रहा हूँ इसे फिर से। मतलब अभी स्टार्ट करिए व्लॉग बनाना इसका। सो गाइस, अभी हमारा जो ऐप था वो सक्सेसफुली रन हो चुका है और यहाँ पर जो मैंने फीचर ऐड करा था अब दिखा देता हूँ सुबह से। तो सिंपली यहाँ से हम नेक्स्ट कर सकते हैं, ये ऑन बोर्डिंग। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, ऐसे करते जाएंगे तो ये सारी स्क्रीन आएंगी और फिर लास्ट में आएगा गेट स्टार्टेड बटन। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन और साइनअप का पूछेगा। तो यहाँ पर मैंने अभी डिजाइन नहीं बनाया, सिंपली फंक्शनलिटी ऐड करी कि लॉगिन साइनअप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सारी डिटेल मैं फिल करता हूँ और क्लिक करता हूँ लॉगिन वाले बटन पर। तो यहाँ पर करते हैं लॉगिन और थोड़ा सा वेट। ये हो चुके हैं हम सक्सेसफुली लॉगिन। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था बॉटम नेविगेशन बार बनाया मैंने, ये रहा। देखो अभी हम होम पेज पर हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाया और इसके आगे के भी टास्क भी नहीं बनाए, सिंपल ये बनाया अभी मैंने सुबह और जल्दी बन गया था ये। तो फर्स्ट है होम पेज, सेकंड है टास्क जो कि ऐसा चेंज होगा, और थर्ड है हमारा लीडर बोर्ड, और फोर्थ है हमारा प्रोफाइल पिक्चर। और जब ये चेंज करूँगा देखना ये चेंज कैसे होता है। स्पीड देखो इसकी और एनिमेशन देखो, पूरा टोटल अच्छा लग रहा है बॉटम नेविगेशन पर। तो अब मुझे सिंपली यहाँ पर ऐड करना है, जैसे मैं होम पेज पर आऊँगा तो यहाँ पर सारी डिटेल्स हो, अगर मैं टास्क पर आऊँ तो यहाँ पर सारे टास्क हो, अगर प्रोफाइल पर आऊँ तो यहाँ पर प्रोफाइल की डिटेल्स हो, जैसे हमारी डीपी हो गई, नेम, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, etc। इसे करता हूँ अभी बंद और यहाँ से कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट टू डू लिस्ट को चेक मार्क, जो कि हमारा न्यू प्रोजेक्ट का जो ऐड करना था एक फीचर, इसे कर देते हैं कंप्लीटेड। और इसमें और भी इम्प्लीमेंटेशन करूँगा, मैंने इतना कर दिया इसलिए इसे कंप्लीटेड कर दिया। थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन और नया फीचर ऐड करूँगा उसमें, और फिर उसके बाद दूसरा कोई सा चूज़ करूँगा इनमें से टास्क। सो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फीचर जो ऐड करना था न्यू प्रोजेक्ट में वो कर दिया है यहाँ पर। और अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कौन सा मेरा न्यू प्रोजेक्ट है, कौन सा टॉपिक है और क्या क्या है। जब थोड़ा सा आगे थोड़ा एडवांस हो जाएगा, मतलब कुछ बहुत फीचर ऐड हो जाएंगे, फिर आपको डिटेल में बताऊँगा विद एग्जाम्पल। और उसी के साथ पिछले बार के जैसे इस बार भी बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है हमारे न्यू प्रोजेक्ट में। तो अभी मैं करने जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद इंग्लिश की कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, फिर इंटरव्यू के क्वेश्चन और लीड कोड के 2 क्वेश्चन सोल्व करूँगा। इतना तो करूँगा मिनिमम आज, और रात में टाइम मिलेगा तो उसमें भी बहुत कुछ करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले देख लो जो मैंने इम्प्लीमेंट करा है अभी वो। तो और अब सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना है और हम हो चुके हैं हमारे ऐप के अंदर लॉगिन। और जैसे हम यहाँ पर होम पेज पर आएंगे नीचे, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है कुछ टुडेज टास्क। ठीक है, यहाँ पर टास्क टाइप है, यहाँ पर सिंपली मैंने डेमो फोटो लगाई है और यहाँ पर भी डेमो मतलब डेमो के लिए एक डीपी लगाई है और नेम लिखा है। और स्ट्रिक भी यहाँ पर जो है वो डेमो के लिए है, मतलब सिंपली लिख दिया यूआई के लिए। और भी इसमें सिंपली ऐसा, अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली स्क्रीनशॉट जो है इसे फ़ोटो को जूम करना हो या फिर फुल देखना हो तो सिंपली यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे और ये फुल शो हो जाएगी इमेज। और यहाँ पर जूम कर सकते हैं जितना चाहे, मतलब इतना कर सकते हैं, और फिर अच्छे से देख सकते हैं पूरी फ़ोटो को। और मैंने ट्राई करा था ये जो व्यू है ये फुल आए, लेकिन नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा इतने ही रहने देते हैं, शायद मोबाइल में फुल आए। ये वेबसाइट में रन करा है मैंने, वेबसाइट के अंदर, इसलिए शायद ऐसा आ रहा होगा। अगर मैं इसे वेबसाइट में कन्वर्ट करता हूँ अपने मोबाइल ऐप को, अब देखो ये कितना बड़ा दिख रहा है, पूरा स्क्रीन फुल कर दिया इसने, ये देखो। और अब इसे फिर से एक बार क्लिक करते हैं, मोबाइल बना देते इसे, जो कि आईफोन 13 प्रो मैक्स ये बन चुका है। और नीचे यहाँ पर है होम पेज, टास्क, लीडर बोर्ड एंड प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं करा है, सिंपली पेज बनाया है मैंने और सिंपल एक टेक्स्ट लिखा है। जैसे यहाँ पर आएंगे हम टास्क स्क्रीन,
लीडर बोर्ड स्क्रीन एंड प्रोफाइल स्क्रीन, और यहाँ पर सिंपली लॉग आउट का एक बटन दे दिया अभी के लिए, बाद में चेंज करूँगा। यहाँ पर डीपी लगाऊंगा, नेम ईमेल पासवर्ड वगैरह ये सब लिखूंगा, और लॉग आउट का बटन जैसे क्लिक करें यहाँ पर ये आगा लॉग आउट, और यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। तो ये रहा ऐप, मेरा नया ऐप। इसे कट कर देता हूँ अभी, इसे भी कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है प्रोजेक्ट में, बाद में बनाएंगे प्रोजेक्ट। तो अभी करेंगे इंग्लिश के कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस और बाकी ये सब। देखो यहाँ पर आप लोगों को ये लग सकता है कि मतलब मैं वन बाय वन करके एक नया नया आइडिया निकालते जा रहा हूँ और उसे बिल्ड करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, मतलब नए नए प्रोजेक्ट बनाते जा रहा हूँ खुद से सोच करके यूनिक। लेकिन मैं भी सब लोगों के जैसे स्टार्टिंग में ऐसे ही सोच रहा था कि मतलब प्रोजेक्ट कैसे बनाए, प्रोजेक्ट का आइडिया क्या रखें और क्या करें इसे। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड या थर्ड या किसी भी ईयर में हो, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सबसे पहले आप सीख लो कोई सी भी लैंग्वेज, जैसे मतलब कोई सा भी डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकता है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। पहले उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट यूट्यूब ट्यूटोरियल सब बना लो बहुत सारे, और फिर जा करके कोई सा एक नया आइडिया ढूंढो, और फिर उसमें जा करके आप लोग वर्क करना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपके माइंड में ऐसा आइडिया आएगा कि मतलब हाँ, इसे भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आपके अंदर एक आइडियाज़ आएंगे कि हम इस ऐसी ऐसी चीज़ों को भी ऑटोमेट कर सकते हैं ड्यूरिंग विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट और कुछ भी डेवलपमेंट। तो अभी सबसे पहले आप लोग ट्यूटोरियल से देख देख कर प्रोजेक्ट बनाओ और भी बहुत सारी चीज़ें सीखो। तो मैं भी ऐसे करता हूँ, जैसे मेरे पास कोई नया आइडिया आया तो मैं छोटे छोटे पार्ट को, छोटे छोटे फीचर्स को सारे ट्यूटोरियल से देखता हूँ, और फिर कंबाइन करके अपना एक नया आइडिया मतलब उसमें यूज़ करके एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ जो कि यूनिक होता है, और जो कि हम लिख सकते हैं अपने रेज्यूमे में। तो अभी चलते हैं हम इंग्लिश कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करना है। सो गाइस, यहाँ पर एक कमेंट आया था जो कि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट एआई वॉइस वर्जन के ऊपर। यहाँ पर देखो, थोड़ा सा जूम करता हूँ भाई। 30 मिनट, भाई 30 मिनट नहीं मिलता है कोपायलट से चैट करने, ओनली 10 मिनट मिलता है। मतलब बोल रहा है 30 मिनट नहीं मिलता, 10 मिनट मिलता है। तो अभी इसे ट्राई करता है। मैं 10 मिनट से ज़्यादा मतलब वॉइस से कन्वर्जेशन करूँगा, चैट करूँगा, और फिर पता चलेगा ये 10 मिनट चलता है या फिर आधे घंटा। मैं इसे कम से कम 10 से 12 मिनट या फिर 13-14 मिनट या फिर 15 मिनट करूँगा, ताकि ये 10 मिनट से ज़्यादा हो। क्योंकि ये भाई बोल रहा है अभिषेक यादव कि मतलब 10 मिनट मिलता है, तो अपन 10 मिनट से ज़्यादा कन्वर्जेशन करेंगे विद कोपायलट, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एआई वॉइस वर्जन। ओके, तो इसे क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एआई। तो यहाँ पर सिंपली आ जाना है आपको माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट पर। माइक्रोसॉफ्ट की बहुत चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बेटर है बाकी ही से। अभी तो ठीक लग रहा है, बाद में बात का पता नहीं। तो सिंपली यहाँ पर ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को, और यहाँ आते हैं वॉइस वर्जन और स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद। हेलो। Hi there, what's up? यस, आई एम फाइन, व्हाट आर यू डूइंग? Good to hear you're doing well. I'd love to chat about anything you're interested in. We could discuss a hobby, dive into a topic you love, Okay, or explore. so can you suggest me or fix me whenever I stuck, or whenever I make a mistake, you can just give me a good answer or correct answer. Totally. I'll be here to help whenever you need it. If you get stuck or make a mistake, we'll work through it together. What are you working on? I'm working on my project called mock interview application. Nice! A mock interview app is a great idea. What's your main goal with it? To help people practice and improve their interview skills? The main goal of the take second. The main goal is behind of my mock interview is practice for real interviews as a college student, because many students don't have friends to practice with them mock interviews. That's why I created a mobile application that will help to practice with online student. Got it. Your app sounds like a brilliant solution. It's true, not everyone has someone to practice with. So offering an online platform for mock interviews is hugely beneficial. How's the development going? Yeah, development. Yes, development be almost done, but I have to add some new features. Can you suggest me some features? Absolutely. Here are a few ideas. AI review. Implement an AI that listens to responses and gives feedback on things like tone, pace, and filler words. But it could be complex. Fair point. Adding AI could complicate things. Another idea is to incorporate a feature where users can get feedback from peers or mentors and even record their mock interviews to review their performance. How about that? No. My mobile application is not about recording or uploading recorded videos or mock interviews. It's just a real world video calling. You can practice with them in a real time.
Gotcha. Real-time video practice is the focus. How about integrating a feature that simulates different interview environments or provides timed responses to mimic the pressure of real interviews? No, I really don't need this kind of features, but thank you for suggesting me. Okay, can you tell me about how I can add a resume checker features in Flutter? To add a resume checker feature in Flutter, you could use packages for text analysis and parsing PDFs or docs. First, allow users to upload their resume in PDF or Word format. Then, use the text analysis tool to identify key resume components, like contact info and skills. You can also integrate a comparison feature against job descriptions to give users targeted feedback. Okay, so how do users get feedback based on resume? Like who gonna tell him? For feedback, you can set up automated criteria-based responses. The app scans the resume and checks for key elements like formatting, keywords, and relevant experiences. It then provides feedback based on the presence or absence of these elements, Okay, as got well it. as Okay, thanks for answering. Can you give me idea how I can build template resume in my app? Like just user can simply click on whether they need to improve. to build a resume template feature. Create customizable templates where users can fill in their details. Offer sections like contact info, education, experience, and skills, and allow users to add or remove sections based on their needs. Okay, so Provide how I can build this in Flutter mock interview app? Can you give me some idea? To build a template resume feature in your Flutter app, first, design a simple, clean resume template using Flutter UI components like text fields and dropdowns. Then create a form where users can input their details into predefined sections like education, experience, and skills. Use a package like Flutter PDF to enable saving and exporting the completed resume as a PDF. Okay, got it. Is it is it easy for beginner to build this kind of apps or feature? Building an app with these features can be challenging for a beginner, but it's definitely doable with dedication and the right resources. Start by breaking down the project into smaller, manageable tasks. There are plenty of tutorials and communities online to help you learn Flutter and Okay. implement features step by step. All right, got Take it. Can you talk to me in English for improving my communication is English grammar etc. Absolutely. We can chat in English to help you improve your communication skills. What would you like to talk about? Can you suggest me some topic? Sure. We can discuss travel, technology, current events, or even hobbies. Which one interests you the most? Maybe it's hobby. Great choice. What's your favorite hobby and why do you enjoy it? I think my favorite hobby is making videos on YouTube, and one of them is like building new apps. Building new apps? Sounds like you've got a passion for tech. What Yeah. kind of apps do you enjoy building the most? I got idea and I will try to make them app. Please fix me whenever I mistake, or if I make grammar mistake, please correct me. Stop while I'm speaking. Got it. Feel free to share your thoughts and I'll help you with any mistakes. All Take right. your time. Can you tell me about your day? Sorry, I can't share personal details, but I'm here to help with any questions or topics you're curious about. What else would you like to discuss? Mm-hmm. All right. Can you ask me if a Flutter interview question is a beginner or is a fresher? Sure. Here's a common Flutter interview question for beginners. Can you explain the difference between stateless widget and stateful widget in Flutter? Okay, so a stateless widget is a kind of widget which is static, do not change its state or UI or values. And a stateful widget is like when I need to change values and UI, it's called a stateful widget. I'm right? Exactly. You got it. Stateless widget is used when the UI is non-changing. And stateful widget is for when you need to update the UI based on user interaction or other factors. Okay, Great explanation. Okay, don't repeat answer. You just ask me question and when I was wrong, correct me. Got it. My bad. Let's try another one. Can you explain the role of the build method in a Flutter widget? Build method. I think the build method is used to getting or accessing the parent data. You're on the right track. The build method's primary purpose is to create a widget's UI by returning a widget tree that describes how the UI should look
using the current configuration and state. It's called whenever the widget needs to be rendered. Okay, next question. All right, here's another. What is the purpose of the setState method in Flutter? Sorry, can you repeat? Of course. What's the purpose of the setState method in Flutter? Uh, I have used such a state method, but currently I can't figure out. Can you tell me a small answer of it? Got it. In Flutter, setState is used within a stateful widget to tell the framework that the internal state of the widget has changed. This triggers a rebuild, so the UI reflects the updated state. Make sense? Okay, got it. Great. Another question? Yes, okay. Yes, sir. Ask me some interesting, which is I have already done. Sure thing. What are the key differences between hot reload and hot restart in Flutter? Maybe hot reload just reload the UI and saw the changes, and hot restart maybe it's change whole it restart whole app and then saw the changes. You're close. Hot reload updates the UI and preserves the app state, making it great for quick changes. Hot restart restarts the app from scratch, losing the current state but incorporating all the changes. Nice job explaining that. Okay, can you ask me some real job question in Flutter? Sure. Here's one you might encounter in a real job interview. How would you optimize the performance of a Flutter app? I really don't know the answer, but I have used this technique to optimize my Flutter app. To reduce code reuse, I have used the reusability of code. Like when I was need to button too many times, I create a separate file of it called my button. Then I was simply calling my button and with custom design. That's a great technique. Code reusability is key for optimizing Flutter apps. Other ways include using const constructors, avoiding unnecessary rebuilds, implementing lazy loading for large data, and using efficient list building methods like list view builder. Okay, Keep up the good. got it. Okay, so what it is free for 10 minutes only or 30 minute using Microsoft Copilot voice feature. I'm here to help without a strict time limit. We can continue chatting for as long as you need. But I think the free version is only for 13 minutes, 30 minutes. I see what you mean. The free version of some services might have time limitations. If you're talking about a specific app or service, it's Yeah, best to check the. Microsoft Copilot U. Gotcha. The free version might have a time limit for voice interactions, but I'm here to make the most of our time together. Anything else you'd like to cover while we're chatting? Okay, thank you so much for conversation with me. But but you didn't correct me anywhere in my English. You're welcome. And my bad for not correcting your English. Let's practice more next time, and I'll be sure to provide feedback on your English. Looking forward to it. Okay, can you give me a feedback on my English out of 10? Sure, I'd say your English is about a 7 out of 10. You communicate your ideas clearly and have a good grasp of grammar. A bit more practice with vocabulary and fluidity, and you'll be even better. Keep it up. Okay, how do you improve vocabulary? Improving vocabulary can be fun. Try reading books, articles, or watching shows in English. But I don't like Engage in to read books because it take too many times. Understandable. You can try listening to audiobooks or podcasts in English. It's a time saver and can help improve your But vocabulary. what is vocabulary? Vocabulary refers to the set of words you know and use in a language. Can you give me In one Hi- simple answer of vocabulary? Vocab. Vocabulary refers to the set of words you know and use in a language. Okay, The more got it. word- But can you give me one simple example? Sure. Think of vocabulary as your personal word bank. The more words in your bank, the better you can express yourself. For example, instead of always saying good, you could use fantastic, superb, or excellent to add variety to your speech. Okay, got it. Can you tell me how to improve my grammar mistake? How to figure out and how to fix my grammar mistake? Hello, are you there?
यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने करीब 10 से 15 मिनट मैंने एआई से इंग्लिश में कन्वर्सेशन किया। ऐसे आप लोग भी कर सकते हो प्रैक्टिस, और ये देता है करीब 30 मिनट डेली आपको फ्री एआई वॉइस वर्जन। तो अगर आप लोग मिनिमम डेली आधे घंटे भी प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश कम्युनिकेशन में, तो धीरे धीरे करके आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाएगी और बेटर हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने वो भी कर लिया, तो इसे करते हैं मार्क डन। और अब चलते हैं हम टॉप 10 एटलीस्ट 10 इंटरव्यू क्वेश्चन लर्निंग। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मार्क कर देते हैं हम टू डू लिस्ट पर, जो कि हमारा इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस विद एआई ये रहा। तो इसे सिंपली कर देता हूँ चेक मार्क, कंप्लीटेड। और अब चलते हैं लर्न एटलीस्ट 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो यहाँ से सिंपली मैं कट करता हूँ, मैंने वो क्वेश्चन निकाल के रखा है नोटपैड में, और हम एआई से भी निकलवा सकते हैं इंटरव्यू के एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन और फ्रेश क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में आ सकते हैं। तो सिंपल मैं चलता हूँ यहाँ पर गूगल क्रोम पर, और एक बार फिर से सबको बता देता हूँ जो भी नया आया हो, तो सिंपली यहाँ पर आ जाना आप लोग चैट जीपीटी पर, या फिर डीपसीक पर भी जा सकते हो आप लोग। और यहाँ पर लिखना है सिंपली गिव मी टॉप। तो मैं पहले लिख लेता हूँ ओके गिव मी टॉप, लेट्स से 10 10 नहीं 20 करते हैं, 20 फ्लटर इंटरव्यू क्वेश्चन, फ्लटर इंटरव्यू शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वेश्चन। तो सिंपली लिखना है यहाँ पर गिव मी 10 फ्लटर इंटरव्यू क्वेश्चन, और एंटर कर देना है। ओके, तो अब यहाँ पर बेटर आंसर आ रहा है हर एक क्वेश्चन का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट? स्टेटलेस डज नॉट चेंज वन बुल्ट वाइल स्टेटफुल maintain state and can update dynamically. Stateless widgets are used for static content where stateful widgets handle user interaction and animation. तो सेम आंसर मैंने भी दिया था, उससे मतलब थोड़ा सा चेंज मॉडिफाई करके, और ऐसा करके बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि आई ने हमसे पूछा था। एक और स्टेटफुल वाला, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन हमसे पूछा था आई ने। और ये रहा हॉट रिलोड और हॉट रिलोस्ट रीस्टार्ट इन फ्लटर, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा था एआई ने। और डिफरेंट बिटवीन ये वाला क्वेश्चन पूछा था स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट। तो इन्हें जल्दी से 20 में याद करता हूँ, जल्दी जल्दी मतलब देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये सॉल्व करे हैं, मुझे पहले से पता है। तो फिर इसके आधे क्वेश्चन तो सिंपली ऐसे ही याद हो जाएंगे, खाली मुझे देखना है और समझना है क्या होता है। तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसे। और हाँ, मैंने जो इंग्लिश की कम्युनिकेशन करी है उतनी ही नहीं करूँगा, इसके बाद भी और करूँगा दूसरी आईडी लॉग इन करके। और कभी कभी 30 मिनट भी करता हूँ, क्योंकि 30 मिनट इज इनफ।